गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज का दिन शुरू हो चुका है, तो चलते हैं हमारा सुबह का काम खत्म कर देते हैं। मतलब इस बार अनिल को नहीं गुन्नू को लेकर कॉलेज छोड़ेंगे, क्योंकि अनिल का मतलब स्कूल में छुट्टी डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो चलते हैं और पिता को उसके कॉलेज छोड़ने, मतलब गुन्नू को उसके कॉलेज छोड़ने। उसके बाद आते समय शायद भूख लग रही है तो कुछ लेकर भी आ जाएँ खाने के लिए। देखते हैं क्या अच्छा मिलेगा सुबह सुबह, तो लेकर आ जाएंगे। तो चलते हैं अभी। तो गाइज माफ़ करना, गर्मी हो रही थी इसलिए टी शर्ट निकाल दिया। तो अभी मैं दही वड़े ला चुका हूँ, तो चलते हैं दही वड़े खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रेडी होकर कोचिंग भी चले जाएंगे। तो चलते हैं अभी खाते हैं। तो गाइज नाउ आई एम रेडी टू गो। अभी चलता हूँ कोचिंग, क्लास ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और होगा तो आज शाम को कहीं जाएंगे घूमने, क्योंकि आज शाम को ज़्यादा काम नहीं है। तो चलते हैं कोचिंग पहले। तो अभी कोचिंग पहुँच चुका हूँ, तो चल के जा रहा हूँ कोचिंग। और गैस कल जो पढ़ाया गया था मतलब समझ में आ भी रहा था और नहीं भी, मतलब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था। तो आज जो पढ़ाया जाएगा कोशिश होगी कि पूरा समझने को। तो देखते हैं, मतलब चलते हैं कोचिंग और कोशिश करेंगे कि आज सब समझ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। तो चलते हैं। तो गाइस क्लास ख़त्म हो चुका है। मज़े की बात यह है कि आज समझ में आ रहा था सब कुछ, इतना भी मतलब हार्ड नहीं था। तो चलते हैं अभी घर, क्योंकि भूख लग रही है। तो गैस अभी शाम हो चुका है और मतलब मैंने खाना खा कर थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया हूँ। तो अभी शाम तो हो चुका है, तो चलते हैं बाहर घूमने। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। और वैसे भी गैस कल मेरा कॉलेज में एग्ज़ाम है, और मतलब जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है तो उसके अगले दिन मैं थोड़ा सा घूम आता हूँ शाम को, कि माइंड फ्रेश हो जाए, तो अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकता हूँ। तो चलते हैं अभी थोड़ा सा बाहर घूमाते हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा है। धूप से मतलब कोचिंग जाते हो, दोपहर को कोचिंग जाते समय मतलब बहुत ही धूप हो रहा था, और मतलब बहुत ही पसीना पसीना हो जा रहा था। तो अभी चलते हैं शाम के बाद थोड़ा सा ठंडी हवा में थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं, तो मतलब मूड फ्रेश हो जाएगा। तो चलते हैं बाहर। Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एरोड्रम पर, मतलब हम अभी एरोड्रम के पार्किंग पर हैं। तो चलते हैं डोकाटो मतलब एरोप्लेन देखने के लिए। वो यहीं पर बहुत दिनों से खड़ा है। तो ये मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, कुछ जानना मतलब जानने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, और देखने के लिए भी। अगर आप भी अगर यही एरोड्रम के पास रहते हैं, अगर भुवनेश्वर में रहते हैं, तो आकर ज़रूर देख लेना। अभी चलते। तो गैस पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो में बना रहा था तब मेरा माइक का चार्ज खत्म हो गया था। तब हमने 2 टिकट ले लिया था पार्किंग का, जो एक टिकट हमको 20 रुपये का पड़ा था, तो 2 टिकट 40 रुपये का। तो अभी चलते हैं एयरक्राफ्ट के पास। तो गैस जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब ये हम सीन शूट कर रहे थे तो मेरा माइक का चार्ज ख़त्म हो गया था, जो मुझको पता नहीं था। तो वॉइस रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हो पाया। तो अभी जो आपके स्क्रीन में चल रहा है, मैं वो डेकोटा के बारे में कुछ बता रहा था, जो आपके अगले सीन में आपको पता चल जाएगा। तो ये सीन मुझको अच्छा लगा, तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में डाल देता हूँ। What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to? तो गाइस ये है एयरक्राफ्ट डोकाटो। मतलब ये गाइस ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने का है। मतलब
आज मतलब इस मॉडल का प्लेन आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इस मॉडल का प्लेन, इस डिज़ाइन का प्लेन आज के ज़माने में आप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये गाइस बेसिकली एक मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने का एक ट्रैवलिंग प्लेन था। अगर फाइटर प्लेन होगा, आप सोच रहे होंगे वर्ल्ड वॉर 2 बोल रहा हूँ यानी फाइटर प्लेन होगा, लेकिन गाइस ये फाइटर प्लेन नहीं है। अगर फाइटर प्लेन होता तो ये आज हमारे सामने खड़ा नहीं होता। तो कोई बात नहीं, चलते हैं इसको मतलब पूरा आपको व्यूज़ दिखाते हैं कैसा है ये प्लेन। Flashing lights dance with fire in the night I'm wired. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Baby, I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Hopeless solution. तो गाइस प्लेन दिखाते एजाज कहाँ चला गया हमको मालूम नहीं। तो चलते हैं उसके पास, वो वहीं पर सामने खड़ा है। तो उसको लेकर शायद उस तरफ से घूमकर हम जा सकते हैं ऊपर। तो चलते हैं उस तरफ से, आपको पूरा प्लेन के पास का नज़ारा एकदम दिखाते हैं, एकदम पास का नज़ारा दिखाते हैं। अगर हो सके, यहाँ पर पुलिस मतलब ऑफिसर्स खड़े हैं, जाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन चलते हैं मतलब हो सके तो दिखाते हैं आपको पास का नज़ारा। तो गाइस मतलब उसके पास जाना देने को अलाउ नहीं करते हैं, मतलब वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं उसके पास जाने का, क्योंकि पहले अलाउ करते थे, लेकिन अब क्या हुआ ना, मतलब वो जाकर उसको डैमेज करने लगे, लोग उसके ऊपर चढ़ने लगे, रील्स बनाने लगे, वीडियोस बनाने लगे, इसलिए मतलब वहाँ पर अभी जाने को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जितना भी देखे अच्छा था। अभी चलते हैं थोड़ा सा पार्किंग में, मतलब लेकर अपना बाइक लेकर फिर से चले जाएंगे घर। और गाइस एक और बात, मतलब ये एयरलाइंस का है, मतलब कौन सा एयरलाइंस को दिखाते हैं, कलिंग का, ये कलिंग एयरलाइंस का है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने का। तो नॉर्मली एयरप्लेन है। अगर फाइटर प्लेन होता तो आज देखने को और मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हुआ आज के लिए बहुत हो गया। तो चलते हैं घर। Flashing lights dance with fire in the night I'm wired. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Baby, I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Hopeless solution. Hopeless solution. You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. Yeah. Moving through all my feels, you're blurring out my vision. Watching your every smile like your television. In your eyes I see myself, I'm falling. Make it make sense, it must be the temptation speaking. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that
get into my feelings. You're a trip giving me hopeless solution, hopeless solution. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution, hopeless solution, hopeless solution. Hopeless solution. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution, hopeless solution, hopeless solution. Lights dance with fire in the night I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. तो गाइस आज CSK मैच हार गया, उसका तो दुख बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं। खुशी इस बात का है कि मतलब कुछ ही बॉल में, मतलब कुछ ही बॉल था और बाकी और बहुत ही रन थे, तो आपने तो देख ही लिया होगा। तो इतना तो रन गया और सिर्फ 4 रन से हार गए। कोई बात नहीं, अगली मैच में फिर से CSK रिटर्न करेगा। तो इस मैच के लिए ज़्यादा तो खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी खुशी तो ज़रूर मनाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं दूसरे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।